So can you see me and hear me? जी। प्रज्ञा, अपने बारे में थोड़ा बताइए। My name is Pragya Gandhi. I did my LLB from Jagran Dixit University, Bhopal, and I've also completed my प्रज्ञा, आपको LLM. थोड़ा तेज बोलना होगा। G. Then I've also completed my LLM from National Law Institute University, Bhopal. I have recently enrolled in PhD as well last year from University of Rajasthan. अब कहाँ से है प्रज्ञा? सर मुरैना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। तो जी आप सर। हैं मध्य प्रदेश से, आपकी पीएचडी चल रही है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। जी ऐसा सर। क्यों? तो अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इज प्रेस्टिजियस इन इटसेल्फ और फिर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ सो आई अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। आपका एलएलबी कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ है? 2021। 2021 में। और आप अभी रिसेंटली पीएचडी किस टॉपिक से कर रहे हैं? सर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स की कंपैरेटिव स्टडी कर रही हूँ। सेक्सुअल एंड, प्रज्ञा आपका शायद इंटरनेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड। राइट्स और वुमेन उसकी कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, ओके। चलिए, आप 2021 में पास आउट हुए हैं, आज है 2025। 2021 से लेकर जी। 2025 तक आपने किन किन स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम्स दिए हैं? तो मैंने अपियर किया है एमपी के लिए। I've appeared for Rajasthan previously as well and Chhattisgarh. छत्तीसगढ़। जी राजस्थान सर। में एमपीजेएस और छत्तीसगढ़ में आप किस किस स्टेज में, कभी आप आज से पहले इंटरव्यू फेस किए हैं? सर लास्ट ईयर राजस्थान में इंटरव्यू। लास्ट ईयर आपने राजस्थान में इंटरव्यू दिया था। चलिए, हमें आप दो बातें बताइए बेसिक सी। पहली बात ये, चूंकि आप मध्य प्रदेश से हैं, तो आप हमें कोई सॉलिड रीजन दीजिए कि हम आपको राजस्थान में अपॉइंट क्यों करें। नंबर वन तो ये। दूसरा ये, आप हमें बताइए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप वापस अपने होम स्टेट चले जाएंगे? सो जो रीजन है, तब मैं मुरैना से हूँ विच इज क्वाइट लिटरली ऑफ राजस्थान। धौलपुर से वी शेयर बॉर्डर सो it's not as if that the place is completely new. Additionally, मेरा maternal side पूरा is from Rajasthan. So I would say half of my roots are from Rajasthan, and we have been told कि हमारे forefathers like they the link lies there, and that becomes one of the reason कि I don't think there is a need of going back to my state because Rajasthan has also been a home to me. चलिए, ठीक है। आपने बोला आप मध्य प्रदेश से हैं और आपने अपना एलएलएम नेशनल यूनिवर्सिटी से किया है। आप हमें बताइए, हाल फिलहाल में देश में टोटल कितनी नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं? So the last I remember 26, but I'm not really sure of the number. 26। एलएलएम आपने नेशनल यूनिवर्सिटी से किया है, और बीए एलएलबी आपने अपने ही एरिया के किसी यूनिवर्सिटी से किया है। जी सर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया प्राइवेट यूनिवर्सिटी भोपाल से में ही। किया है। आप जी। कोई तीन बेसिक कंपैरिजन बताइए। एक एनएलयू से एलएलएम करना, और बीए एलएलबी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना। आपको तीन, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप कोई भी तीन एस्पेक्ट हमें बता सकते हैं। सो एक जो मेजर डिफरेंस लाई करता है दैट इज विद रिगार्ड टू द स्टडी कल्चर, specifically with regard to the kind of colleagues or the batchmates that you come across. तो जब मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थी तो वहां पे काफी ज्यादा आई वुड से लिमिटेड डायनामिक्स था क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम मध्य प्रदेश। बट जब नेशनल्स में आई वाज देयर, वहां पे ऑलमोस्ट हर स्टेट से बच्चे थे एंड देयर वाज दिस होल डाइवर्स ग्रुप दैट आई कुड कम अक्रॉस एंड आई कुड कॉन्टैक्ट विद। सो दैट वाज वन थिंग। सेकेंड थिंग जो बहुत मेजर मुझे डिफरेंस लगा, दैट वाज विद रिगार्ड टू कि सर व्हाइल आई वाज इन प्राइवेट बिकॉज इट वाज मेकिंग अ नेम फॉर इट्स ओन, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज अगर आप इजीली विलिंग है तो आपको इजीली एक्सेसिबल थी।
which I would चलिए, say. आप एलएलएम जो आपने किया एनएलयू से, आपने वहां से एलएलएम करके ऐसा क्या मेजर चीज सीखी जो आपके इस जुडिशियल प्रोफेशन में बहुत हेल्पफुल होगी? So, एक साल में एलएलएम किया, सो एंड दैट टू ड्यूरिंग कोविड ड्यूरेशन, सो दैट गेव मी द गुड वर्क लाइफ बैलेंस, जो मुझे लगता है जुडिशरी में काफी अच्छे से यूजफुल रहेगी. गुड वर्क लाइफ बैलेंस? यस. ऐसा कुछ भी जुडिशरी में नहीं है। आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कोर्ट में रहना है। शाम को फिर घर आके फिर फाइल पढ़नी है, रात को 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। अगर आपको गुड वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो जुडिशरी आपके लिए नहीं है। क्या आप अब भी जुडिशरी करना चाहेंगे? सर. रीजन? आप जज क्यों बनना चाहते हैं? So there are various aspects to it. First is obviously this provides a good amount of social security. Second is that gives a sense of achievement, sir. एक daily basis पे एक sense of accomplishment मिलेगा कि we are doing something for the larger good and we are doing something productive on daily basis. वो जो instant gratification की एक instant achievement की feeling है, in the longer run also it would be there, but daily basis पे भी also the self satisfaction would be there. चलिए ठीक है, अपनी कोई वीकनेस बताइए, 2 वीकनेस। So the one weakness that I think exists, कि I'm very particular about my work, कि चीजें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अगर करना है, so that is to be done in that particular manner only. So that is one weakness that I think of. And second weakness that I can think of right now is that at times, because of this organized way, I tend to get a little anxious when things do not go in the way I want to go. ठीक है, आपने लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया, कुछ मेजर रीजंस बताइए जिस वजह से आपका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ। So because मेरा ये लास्ट टाइम फर्स्ट इंटरव्यू था, तो एनजाइटी इनिशियली थी. वो आई बिलीव इन द नेक्स्ट अ मिनट और टू वो काम डाउन हो गया था, बट वो इनिशियल, आई थिंक वो थोड़ा इम्प्रेशन वहां पर थोड़ा चला गया, ऐसा कि आई वॉज लिटिल एंशियस. One thing that I could come across is that, and there were a few questions जो मुझे लगा कि I could have answered better in after thinking over that. चलिए, कोई कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप बताना चाहेंगे या फिर आप हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए कंफर्टेबल हैं? The subjects तो सारे पढ़े हैं, but personally my personal preference would be IPC and BNS, but बाकी every subject has been prepared. चलिए ठीक है, आईपीसी और बीएनएस के बाद कोई सेकंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट आपका? Sir, I would say Hindu law. हिंदू लॉ? जी सर. चलिए ठीक है, ये मैग्नोटन्स केस जो है, इसको ब्रीफली समराइज कीजिए, मैग्नोटन्स केस को। The McNaughton's case जो है, that laid down basically the ground rules for insanity. तो वहां पर प्राइमरीली कोर्ट ने बोला था कि एक प्रजम्पशन ये रन करेगा कि जनरली एक इंसान को सेन माना जाएगा, एंड जब वो प्रूव कर देगा तब इनसेन माना जाएगा. एडिशनली इस केस में कोर्ट ने बोला था कि जस्ट बिकॉज अ पर्सन हैज बीन रिगार्डेड मेंटली इनसेन, दैट वुड नॉट इक्वेट टू लीगल इंसेनिटी. तो कोर्ट ने यहाँ पे डिफरेंस ले डाउन किया था बिटवीन मेंटल इंसेनिटी एंड लीगल इंसेनिटी, एंड ये काफी हद तक ये प्रिंसिपल वी सी इन आवर इंडियन लॉ. चलिए ठीक है, कोई 5 न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्राइम? सर, पेटी ऑफेंसेस, पेटी ऑर्गेनाइज ऑफेंसेस, फिर उसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम्स, टेररिस्ट एक्टिव ऑफेंस, फिर उसके अलावा स्नैचिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस, एंड सेक्शन 152 में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर एक्ट किया जा रहा है. चलिए ठीक है, कोई और इसके अलावा जो आप अभी मिस कर रही हैं, कोई जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ऑफेंस है? सो एक और है सेक्शन 69 में, जिसमें वुमेन को अगर फॉल्सफुल प्रॉमिस या फिर डिसीट के साथ उस सेक्सुअल फेवर या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है. एडिशनली एक और नया सेक्शन इंक्लूड किया है जिसमें चिल्ड्रन को अगर हायर किया जा रहा है एक्सप्लॉइटेशन के पर्पज से,
तो वो एक एडिशनल नया प्रोविजन दैट आई कैन रिमेम्बर ऑफ राइट नाउ। चलिए, पूरा बीएनएस एनफोर्स हो चुका है क्या? तो 106 का जो सब सेक्शन 2 है, दैट इज वन पार्ट जो हिट एंड रन केसेस के लिए है, दैट इज स्टिल लेफ्ट टू बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, अभी हिट एंड रन केस स्पेसिफिकली किस प्रोविजन से डील कर रहे हैं फिर? सर सॉरी, आई एम नॉट रियली एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट इट? हाल फिलहाल में कोई सिचुएशन आपके सामने आती है हिट एंड रन केस की, आप जज है, आपको चार्ज फ्रेम करने हैं, तो किस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ आप चार्ज क्रिएट करेंगे? क्योंकि बीएनएस का 106 सबसेक्शन 2 तो अभी एनफोर्स है नहीं, तो स्पेसिफिकली किस सेक्शन के साथ आप चार्ज फ्रेम करेंगे? So I am a little unsure about this particular question, but if I would to answer this, जो सेक्शंस मुझे मेरे अकॉर्डिंग सही लग रहे हैं, एक तो रैश ड्राइविंग, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का हो जाएगा। डेथ कॉज हो गया है? और उसके अलावा अगर डेथ कॉज हो गया है तो फिर सर डेथ बाय नेग्लिजेंस का नॉर्मल केस बनेगा, जो 106 सेक्शन 1 है 106 का उसमें जो क्लॉज इट 1 वुड है, बी कवर्ड। ठीक है, 106 का जो क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 जो है, वो जी उसका सर। नेचर बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है? नहीं, I'm आपकी sorry, sir. आवाज I'm नहीं आ not रही है really able हमको। to recall it. I'll read about this after the interview. चलिए ठीक है, एक मेरी तरफ से आखिरी क्वेश्चन, रेट ऑफ प्रोहिबिशन और रेट ऑफ सर्जरी में क्या डिफरेंस है? Uh, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रेट ऑफ सर्जरी? so writ of prohibition में proceeding. Sir, am I audible? जी बोलिए। जी सर। So writ of prohibition में लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर दिया जाता है टू डू एनी एक्शन, और जो तीन ग्राउंड्स पे बेसिकली होता है, अल्ट्रा वायर्स ज्यूरिसडिक्शन अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंट्रा वायर्स ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर इलीगल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट रिट ऑफ सर्चरारी में जब बात करते हैं तो वहाँ पे लोअर जो अथॉरिटी है उनका ऑर्डर को क्वॉश कर दिया जाता है, देन द हायर अथॉरिटी टेक्स अप द मैटर। चलिए ठीक है, आपके मुरैना में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करनी है, क्या मुरैना में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो सकती है क्या? सर, कॉन्स्टिट्यूशन सर्किट बेंच का प्रोविजन देता है, तो अगर सर्किट बेंच के लिए परमिशन मिल जाएगी सो दैट कैन बी अ कौन पॉसिबिलिटी। सा स्पेसिफिक प्रोविजन है जो इससे डील करता है, और क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे इसके लिए? So I'm not really able to recall that particular provision right now, but चलिए that ठीक है, ओके, थैंक यू is after सर। the Good evening, Pragya. sorry, sir. Am I audible? I I think think so. so. Some internet issues Yes, are sir. there because you are okay. There are some delays in the internet. No issues. Okay, you are currently pursuing your PhD, right? As Yes, you sir. said, Yes. only 1 year completed. The 1.5 year coursework complete हो चुका है, and then after that 1 year. Okay, how many time left as of now? So the minimum duration is 3 years, so 1.5 year more. Okay, almost half time related, right? Remaining, Yes, right? sir. जी Okay, sir. so in case you got selected and become the judge in the Rajasthan, so how you are going to continue your PhD? I, I'll be able to do it क्योंकि कुछ काम already I have done a few work, and then my guide has been quite supportive throughout the last 1.5 year. So, and he has always been of the opinion कि if required, I can extend it even beyond 3 years if required. It may be the case. And I have various batchmates of PhD who were last year selected in Rajasthan Judiciary, and they are still continuing with both the things. So I feel that is manageable. Okay. So your subject is sexual and reproductive rights, right? So, Okay, there is a long-term debate is going on regarding the marital rape. yes, sir. So Supreme Court also denied such kind of thing that it is not a crime in India.
What is your say, or is there any particular judgment in which you want to just add to support your view? So personally, marital rape in itself as an offense, the idea is progressive, but उसकी evidentiary proof करना is something which is challenging, and that is where the problem lies with marital rape. कि वो closed room में उसके evidence किस तरह से establish किए जाएंगे, because already parties are in a marital relationship. तो वहां पर consent का element prove करना कि कब consent थी कब consent नहीं थी, that is where it becomes a challenge. And that is why I feel like the judiciary is a little hesitant with regard to, the Supreme Court is a little hesitant with regard to recognizing it. The marital rape has to be recognized. What is your say on that particular part? Should we criminalize it or not? I feel somewhere down the line we can, but not right now, because इतनी अभी awareness ही नहीं है in the society that there exists an element of consent even after rape, even after marriage. So that becomes an issue. Okay. So, abortion is legalized in India. The abortion termination of pregnancy act जो है उसके अंडर अगर प्रोविजंस अलाउ करते हैं then only it can be done. Based on which Otherwise committee's it's not. recommendation it was allowed in India? I'm not really aware of the committee. I'll read about this after the interview. Sorry, sir. Okay. First country in the world added abortion right as a fundamental right. Can you name that particular country? Sorry, sir. I'm not really able to recall it. I'll read about this. Okay, no issues. There is a long-term demand from the LGBTQ community also that legalize our marriage. And we when talk about their rights, so we should legalize. It is not that much concern, right? We have in case of that marital rape concern. So at least we can legalize that particular part. We should listen to their particular demands at least. So So I would agree to your opinion that there is a need of providing them their basic rights and to recognize and give them legal status, क्योंकि काफी सारे protections ऐसे हैं that they are not able to attain or achieve because of the lack of legal status. And once the legal status is provided, they can obviously gain certain protections and can claim for certain rights. okay, so is there any particular case in which Supreme Court denied such kind of rights? Can you recall the name of the case? The Supreme versus Union of India was the case जहाँ पे the court recognized that there is a need for such recognition, but then the court stated that because right to marriage has not been provided as a fundamental right, the court does not have the authority to amend or make changes in the legislation, and that falls within the domain of the Right to marry legislature is to not a do so. fundamental right. It is not a fundamental right, sir. So, what was the judgment of Supreme Court in that Husainara case, Safin Jahan and Husainara case? I'm not really able to recall the exact wording of the case, but the court, from what I remember of the court, talked with regard to habeas corpus writ, because the father claimed for habeas corpus against the girl, and the court recognized that the girl had the authority to choose her legal partner, but it did not recognize right to marry as a fundamental right. Okay, court didn't say that right to marry is going to come under the ambit of Article number 21. Yes, sir, from If what you I are, can remember of. okay, you belong to Morena, right? Yes, sir. So, कौन से संभाग में है ये मध्य प्रदेश में? The ग्वालियर संभाग. Sorry, come again. The ग्वालियर संभाग. चंबल में नहीं? तो चंबल संभाग कंसिडर किया जाता है, बट यूजुअली ग्वालियर संभाग नेम प्रेफर किया जाता है क्योंकि चंबल अपने आप में काफी बड़ा डिवीजन हो जाता है, एंड देन अ लिटिल पार्ट ऑफ चंबल आल्सो फ्लोज इन राजस्थान, सो इस वजह से ग्वालियर संभाग becomes a little more easier to associate. Okay, it means the headquarter is Gwalior, not the Morena itself or Chambal Sambhag ka. So there is no headquarter as such. The Oh, Gwalior has various, I would say, bodies, but
it has not been legally recognized as a headquarter from what I know. Okay. Morena is very world famous for the beheads. What is behead? So Bihar results from the flow of river only. The Chabal River, whenever it flows, it leads to certain accumulation of sand at a one particular point of place, and Baki jagah pe it leaves a way to go out and go in. So there has been numerous instances where in past the Bihars were used by dacoits and robbers uh, to either evade the authorities or to commit their dacoities and robbery. Any famous decade you can recall? The Phulan Devi was one, Pan Singh Tomar was another. Okay. Morena is also number one in production of something in India. So from what I know of, it is sarson ka production. That is, It's honey, sahad. I was not aware of this. I'll read about this after this interview. Okay. And when we talk about the sex ratio in Madhya Pradesh, तो Morena almost जो है after the Bhind second place पर है. So why such kind of situation in Madhya Pradesh or specifically in the Morena? What are the reasons that so low uh, sex ratio is there in Morena? I believe that lies with the thought process of the people. क्योंकि अभी भी the thinking of the people have not changed a lot, and they still consider woman or girl child as a burden. So that process in itself, the thought process Do makes you it the think reason. this is the mindset is the only reason of low sex ratio? So there are a few other reasons I would not disagree to. But then one of the reason is mindset, and other reasons are flowing from the mindset itself. That people are not really comfortable, or I would say safe, with the idea that women leads their family, or they are not open with the idea that women are safe in a society. So that all leads because of the mentality. Okay, the old parliamentary structure is inspired from a temple that is there in the Madhya Pradesh. What is the name of that temple? The Metavli Padavli. It's quite close to Morena, Metavli Padavli. The old parliamentary structure, the circular Yes, sir. structure. Yes, sir. Okay. And the name of the you are saying about the location. I am saying the name of the temple, the very famous name known all over India. It is referred as Metavli Padavli only. It is not Chausat Yogini Mandir. So, Okay, mm, no issues. Thank you.